Very good morning, students. Welcome to your science class. Class 7th, we are continuing with chapter number 18, wastewater story. Okay, we have completed our activity 18.4 and we have to start from wastewater treatment plant. So the treatment of wastewater involves what kind of changes in the process that are physical, chemical and biological processes which remove physical, chemical and biological matter that contaminates the wastewater. Fine, so there are basically three type of process that are involved in the treatment of water waste. These are your physical, chemical and biological process. Now what is the steps for that? Wastewater is passed through the bar screens. Bar screens are large screens in which the objects like rags, sticks, cans, plastic, packets, napkins, etc. are removed. फाइन, बार स्क्रीन्स की हेल्प से हम ये सारे ऑब्जेक्ट्स अपने वेस्ट वाटर में से रिमूव कर पाते हैं. The next step is your, then after the bar screens, the water then goes to the grit and sand removal tank. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम उसके अंदर जो भी ग्रिट या सैंड होता है उस टैंक में जाता है जहाँ पे वो चीज़ रिमूव होती है, सो दैट द स्पीड ऑफ द वेस्ट वाटर इज डिक्रीज्ड in order to allow the sand, grit and pebbles to settle down. उसके अंदर जो भी sand है, grit और pebbles हैं, उसका जो speed है वेस्ट वाटर की reduce कर दी जाती है, decrease हो जाती है, जिससे कि सारी impurities settle down हो जाएं. The next step is your, the water is then allowed to settle in the large tank which is sloped towards the middle, जिसको हम किसकी साइड पे, मिडल की साइड पे स्लोप कर देते हैं, जिससे कि सॉलिड्स लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम. फेसेस जो होते हैं, ह्यूमन वेस्ट जो होता है या एनिमल वेस्ट, वो कैसे बॉटम में सेटल हो जाता है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ द स्क्रेपर इट इज रिमूव्ड and that is known as sludge. Fine. So the solid like faces settle at the bottom and they are removed with the help of a scraper which is known as sludge. Please underline this. This is important. And a skimmer removes the floatable solids like oil and grease. आप स्किमिंग प्रोसेस मतलब ऊपर से जो हम एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करते हैं उसमें क्या होता है, सारे फ्लोटेबल सॉलिड जैसे कि आपकी ऑयल या ग्रीस वो रिमूव हो जाती है. वाटर सो क्लियर इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर. आफ्टर दीज इम्प्योरिटीज हैव बीन रिमूव द वाटर इज नोन एज क्लैरिफाइड वाटर. Coming to the next page, the sludge is then transferred to a separate tank. Sludge को हम कहाँ करते हैं, दूसरे टैंक में separate कर देते हैं, where it is decomposed by anaerobic bacteria. Anaerobic bacteria कौन सी conditions में काम करता है, in the absence of oxygen. So उस sludge को हम एक अलग से टैंक में इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया डालते हैं जिससे कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो पाए. The biogas is produced in the process which can be used as a fuel. So when anaerobic bacteria is working on the sludge, it produces biogas, and the biogas is used as a fuel or it can be used to produce electricity. Air is then pumped into clarified water to help the aerobic bacteria to grow. Now, in what conditions aerobic bacteria is growing? It is growing in the presence of oxygen because we are pumping air into the clarified water. Fine. So the bacteria consume human waste, food waste, soap and other unwanted matter which is still remaining in the clarified water. तो बैक्टीरिया उसकी कंज्यूम करने में हेल्प करता है. After several hours, the suspended microbes settle at the bottom of the tank. It is known as activated sludge. Please underline this definition also. जब बहुत घंटों बाद आफ्टर सेवरल आवर्स जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम टैंक के, तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज. द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप. फाइन. नेक्स्ट पैराग्राफ. द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% ऑफ वाटर. उसमें कितना वाटर कंटेंट होता है, 97%. एंड द वाटर इज देन रिमूव्ड बाय द सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन. उसके बाद वाटर कैसे उसमें से रिमूव करा जाता है, किसी मशीन्स के थ्रू जिसको हम क्या कहते हैं, सैंड ड्राइंग बेड्स. एंड देन द ड्राइड स्लज कैन बी यूज्ड एज अ मेन्योर. आपको पता है मेन्योर क्या होता है. एंड देन रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. और उसके बाद हमने जो ऑर्गेनिक मैटर या न्यूट्रिएंट्स थे हमने उसको सॉइल में वापस cycle complete कर दिया है. The treated water has a very low level of organic matter and suspended matter. Clear? So it is then further discharged into the sea or a river or a ground after it is being processed. So the nature cleans it up further.
sometimes it becomes necessary to disinfect the water with the chemicals like chlorine and ozone. आपने देखा होगा कि स्विमिंग पूल में भी हम क्लोरीन टैबलेट्स डालते हैं इन ऑर्डर टू डिसइंफेक्ट दैट. सो it is known as chemical treatment. In this, we are using ozone and chlorine in order to disinfect the water before it is being released into the distribution system. Clear? So this is the process class. This is a very important waste water treatment process. आपको बहुत अच्छे से याद करना है. It can be one of the question in the form of a long answer question. Clear? So read it very carefully. The next topic is how can you become an active citizen? So waste generation is a natural part. We cannot deny from that, and it is a human activity. But we can limit the type of waste and quantity. हम waste को ख़त्म तो नहीं कर सकते, वो natural चीज़ है, but हम उसकी quantity को reduce कर सकते हैं. सो ऑफन वी हैव रिपेल्ड बाय ऑफेंसिव स्मेल. हमें बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अगर सीवेज या ड्रेनेज खुला होता है तो उसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आती है. सो वी आर वेरी फील वेरी बैड. So the sight of an open drains is very disgusting, and the situation even worsens in the rainy seasons. You know that, and you must have observed this kind of a situation also when the drains start overflowing. So we have to wade through the mud pools on the roads, and very unhygienic and unsanitary conditions prevail because of the flies and mosquitoes and other insects breed in that. Fine. So you can be enlightened citizen and you can approach the municipality also or the Gram Panchayat. Insist that the open drainage should be covered. And if the sewage of any particular house, अगर किसी भी घर का जो सीवेज है अगर आपके neighborhood में and it is making dirty, then you should request them to be more concentrate about the others' health. Clear? You can see here in this image कि इसमें जो lady है she is throwing the solid waste directly into the sink, but it should not be done that. The proper method is that you should throw the solid waste in the dustbin. You should crush that in the dustbin, not in the sink. Fine. So let's talk about some better housekeeping practices so that we can minimize or eliminate the wastewater at their source and from where they are releasing down. So everybody of us are using cooking oils, fats. It should be not thrown directly into the drain, so they can harden the and block the pipes. अगर हम उसे अपने वेस्ट वाटर सिंक में या वहाँ पे सीधा डिस्पोज ऑफ कर देंगे अपने ड्रेन्स में, तो क्या होगा, उससे जो हमारे ब्लॉक्स हैं, जो भी वाटर ब्लॉक्स है या पाइप है, वो सब क्या हो जाएंगे, हार्डन हो जाएंगे. ठीक है, उसकी वजह से वो रप्चर भी हो सकते हैं, वो क्लॉग हो सकते हैं उनमें. ये आप ये कह सकते हो कि ओपन ड्रेन्स में जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, सो थ्रो ऑल द वेस्ट इन द डस्टबिन्स. फाइन. सो केमिकल लाइक पेंट, सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड्स एंड मोटर ऑयल, मेडिसिन, ये सब भी क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, विच आर हेल्पिंग अस इन ऑर्डर टू प्योरीफाई द वाटर. तो हमें ये सारी चीज़ें भी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करनी चाहिए. वी शुड नॉट थ्रो देम डाउन द ड्रेन. क्लियर? Yes, टी लीव्स. टी लीव्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन आर होम्स. हम सभी टी लीव्स को यूज़ करते हैं. सॉलिड फूड रिमेन्स होते हैं हमारे घर में, कुछ पील्स होते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स पील्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स एक्सेट्रा. दे शुड नॉट बी थ्रोन डायरेक्टली इनटू द सिंक्स. They should be thrown in the dustbin. So make sure you throw all these kind of waste in the dustbins, as these waste choke the drains and they do not allow the free flow of oxygen into that, so that microorganisms cannot decompose the waste. This hampers the degradation process. Clear? Let's talk about some sanitation and disease. The poor sanitation and contaminated drinking water is the cause of large number of diseases. आपको पता है कि अगर सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी और हम कंटामिनेटेड वाटर को पिएंगे तो हमें बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं. सो लेट्स लुक एट आवर ओन कंट्री. अ वास्ट नंबर ऑफ पीपल आर स्टिल विदाउट सीवेज फैसिलिटीज़. हमें ये देखना है कि बहुत सारे जो लोग हैं, आप ये देखो कि हम उनको प्रॉपर सीवेज फैसिलिटीज़ भी नहीं मिली हुई हैं. वेयर डू दे रिलीव देमसेल्व्स? सो वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पीपल विच डेफिसिट्स इन द ओपन, on the river beds and railway tracks, near the fields, and many a time it is done directly into the water. So it is very bad practice. We should not put
our untreated human excreta is a health hazard and directly into the water bodies. It may cause water pollution and soil pollution also. So both the surface and groundwater gets polluted with that. So groundwater is a source for tube wells, springs, and many rivers. You have learned in chapter number 16. So it becomes the most common route for waterborne disease. Please underline the waterborne diseases such as cholera, typhoid, polio, meningitis, hepatitis, and dysentery. You can be asked name some waterborne diseases. So you have to write all these diseases. Please mark it as an important. Fine. The next topic is alternative arrangement for sewage disposal. What can be done as an alternative for the sewage disposal? So, in order to improve the sanitization, low cost on site sewage disposal system has been encouraged. Fine. Please underline this also. That is on site sewage disposal system. For example, your septic tanks, chemical toilets, composite pits. These are important examples of your on site sewage disposal. फाइन सो सेप्टिक टैंक्स जो होते हैं वो सूटेबल होते हैं कहाँ के लिए? फॉर द प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो सीवेज सिस्टम, यहाँ पे सीवेज सिस्टम ही नहीं है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में या कोई आइसोलेटेड बिल्डिंग्स हो गई या क्लस्टर ऑफ ओनली 4 to 5 हाउसेज आर देयर. फाइन. तो उन केसेस में हम से अपने सेप्टिक टैंक्स को यूज़ कर सकते हैं. सो सम ऑर्गेनिजम्स ऑफर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी ऑल्सो. सो दीज टॉयलेट्स डू नॉट रिक्वायर स्केवेंजिंग, इसमें स्केवेंजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. Fine. So excreta from the toilet seats flow through covered drains into the biogas plant. वहाँ पे डायरेक्टली उसको बायोगैस प्लांट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस होती है and which can be used as a source of energy. Clear? So it is a very good alternative and it should be used very frequently where the proper disposable systems for the sewage is not there. Clear? Our last topic is sanitization at public places. In our country, fairs are organized periodically, so a large number of people participate in them. Clear? In the same way, railway stations, bus depot, airport, hospitals are very busy places. Thousands of people visit them daily. So the large amount of waste is being generated here. It must be disposed of properly and otherwise epidemics could break out. So it is the duty of the government that it has laid down certain standards of sanitation, but we have to follow them also. But unfortunately, we are not following because they are not strictly enforced on us. So, however, all of us can contribute in maintaining the sanitization at the public places. It is our duty, being a responsible citizen of India. So, we should not scatter the litter anywhere. Litter क्या होता है बेटा? आपने कोई रैपर खाया, कुछ भी आपने eatables खाए, you throw that wrapper anywhere. Fine. So, you are littering actually. It should not be done, and if there is any dustbin, you should dump that waste or any that packet or product into that only. If there is no site dustbin is not there, we should carry the litter home and throw it in the dustbin. This is the practice we are doing in our school also. Fine. Next is the conclusion of the chapter. Coming to the conclusion part, we all have to play a role in keeping our environment clean and healthy. You should realize your responsibility in maintaining the water sources in a healthy state. Fine. So adopting good sanitization practices, it should be our way of life, and as an agent of change, your individual initiative will make a very good difference and it will be a great difference, you can say. Influence others also with your energy. You can tell others also in your neighborhood, tell about the ideas and optimism. It is a positive thinking in order to keep your area neat and clean. A lot can be done if the people work together, and there is a great power in collective actions. So with this we have completed our chapter. I hope you have read earlier also. Perform your test properly. Fine, you have chapter number 5 test. Do it properly and start writing all the question answers. I'm sending you the PDF in your notebook clearly. Okay, thank you and have a nice day.